Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Bhagavate Vasudevaya. Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Pada Sahagana Vajita Sri Visakanvitamsa He Krishna Karuna Sindhu Dinakanda Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Dr. Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrindavan Sute Devi Pranamami Hare Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada. Hare Krishna. Continue our reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46. Buddha visits Vrindavan. स्कंद अध्याय 46 श्लोक संख्या 20 श्री उद्धव की वृंदावन यात्रा। Uddhava has reached Vrindavan. श्री उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं। Were received by Nanda Maharaj. और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आतिथ्य सत्कार हुआ। Now Nanda Maharaj is expressing his feelings. अब नंद महाराज अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। He was asking Uddhava if Lord Krishna remembers his family and he would like to return one day to see them. और नंद महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या कृष्ण उनकी याद करते हैं और क्या वो कभी वापस मिलने आएंगे। If Krishna comes, then it will be a chance, a good chance to look at his lotus face. क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमें पुनः उनके सुंदर नेत्र और उनका सुंदर मुख देख सकेंगे। So Nanda Maharaj continued. तो नंद महाराज आगे वार्तालाप करते हैं। Davakne vata varsacha vrisa sarpacha rakshitaha duratebhyo mrityobhyaha krishnena sumahatmana. We were saved from the forest fire, the wind and rain, the bull and serpent demons, from all such insurmountable, deadly dangers by that very great soul, Krishna. उस महान आत्मा श्री कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग,
तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। कृपया सब लोग अपना फोन साइलेंट कर लें। Nanda Maharaj is remembering how Lord Krishna protected them from forest fire. नंद महाराज स्मरण कर रहे हैं कैसे कृष्ण ने उनकी जंगल की आग से रक्षा की थी। From Indra's anger. इंद्र के क्रोध से रक्षा की थी। From Aristasura. अरिष्टासुर नामक दानव से रक्षा कैसे की थी। From Kaliya. कैसे कालिया को का दंड चूर किया था। So many other deadly dangers. और इस प्रकार बहुत सारे अत्यंत घातक संकटों से कैसे कैसे बचाया था। So Nanda Maharaj said, Krishna protected us from all these dangers. तो नंद महाराज बोल रहे हैं इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें हर प्रकार के संकटों से बचाया था। And now that he is not here, who is going to protect us? Especially death will come. Who is going to protect us from death? और अब वह नहीं है तो हमें कौन बचाएगा, खासकर मृत्यु। Nanda Maharaj also said, नंद महाराज यह भी बोलते हैं, it would have been better यह अच्छा होता that Kaliya was not killed. कि Kaliya was not sent away. कि कालिया को भगाया नहीं गया होता तो अच्छा होता। And also, Giriraj is not reduced. और अगर और गिरिराज अगर छोटा नहीं होता, If Giriraj is still as tall as supposed to be, we will have climbed there and jumped and commit suicide. अगर गिरी गोवर्धन उतने ही ऊंचे होते तो हम ऊपर चढ़ के अपनी आत्महत्या कर लेते, लेकिन अब छोटा हो गया तो मरेंगे नहीं। Giriraj is not there. लेकिन अब गिरिराज नहीं है And Kaliya was sent away. और कालिया गया भाग गया है। Would have gone and entered into Kaliya. अगर कालिया होता तो हम कालिया घाट में जाके मर गए होते। That would be a very good feast for the snake. और इस प्रकार हम उस सांप द्वारा खा लिए गए होते। Krishna chastised him and sent him away. कृष्ण ने उसको मार के भगा दिया। All these things is meant to punish us because we don't have any way to go again to commit suicide. अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है ताकि हम मर सकें। And Uddhava is looking and he is hearing Nanda Maharaj speaking like this. और उद्धव जी यह सब सुन रहे हैं नंद महाराज से। This is not lamentation. यह शोक नहीं है, This is bliss. यह आनंद है। On the mundane level, this is lamentation. भौतिक स्तर पे हमें लगता है कि यह शोक किया जा रहा है, But on the spiritual level, this is bliss. आध्यात्मिक स्तर पर यह परम आनंद की अनुभूति है। They appreciated that Kaliya should have stayed. वो सराहना कर रहे हैं कि कालिया रुक गया होता, But now Kaliya is gone. लेकिन अब तो कालिया चला गया है। If you have a means to commit suicide, when the suffering is too much and you have nothing to live for, what's the next thing? Just die. अगर आपके पास आत्महत्या करने का साधन है तो जब आप बहुत अत्यंत कष्टदायक स्थिति में होंगे क्या करेंगे? But आप मर जाएंगे। the Brajavasis have no way to commit suicide. लेकिन ब्रजवासियों पर अब कोई साधन नहीं बचा है, वो कैसे मर जाए? It means that Krishna is actually very wicked. तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि कृष्ण बड़े धूर्त हैं। He does not give us chance to act otherwise. हमें कोई मौका नहीं दिए कि हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकें मर के। So Uddhava is leading the lesson Krishna sent him for. तो उद्धव जी अब एक एक करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए उनको भेजा गया है।
to try to study the love of the Bible verses for him. और वो देख पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ब्रजवासियों का प्रगाढ़ प्रेम श्री कृष्ण के लिए. As we remember the wonderful deeds Krishna performed, his playful sidelong glances, his smiles and his words, O Uddhava, we forget all our material engagements. जब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उनकी चपल चितवन, उनकी हंसी तथा उनकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो हे उद्धव, हम अपने समस्त भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं. So Uddhava replied, उद्धव इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, you have seen Krishna enough that Krishna's lotus face is already planted in your heart. आपने कृष्ण को इतना देखा है कि कृष्ण आपके हृदय में बस गए हैं. And you can also remember his beautiful, charming smile. और आप इस प्रकार कृष्ण का सुंदर मुख और उनकी सुंदर हंसी का स्मरण कर पा रहे हैं. You remember all the wonderful deeds Krishna performed here. आप सारे कार्यकलापों को आप स्मरण कर पा रहे हैं. So why are you worried? Just meditate upon those things and be satisfied. तो उद्धव जी बोलने के आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बस इन्हीं का स्मरण करिए और संतुष्ट रहिए. Nanda Maharaj replied, नंद महाराज उत्तर देते हैं, that is true. यह सत्य है. You are correct. आप सही हैं. But लेकिन even though recollection of Krishna removes all suffering, now because of our ill fortune, that remembrance creates more suffering. तो यानी कि भगवान कृष्ण के जाने से हमें दुख हुआ था, लेकिन अब उनका स्मरण करने से हमें और पीड़ा होती है. That is true. यह सत्य है. One day Srimati Radharani was एक दिन श्री राधारानी very much absorbed बहुत अत्यंत निमग्न थी in these feelings of separation. इस विरह की पीड़ा का स्मरण करते हुए. So Lalita Sakhi saw her तो ललिता सखी ने उनको देखा and she said, और उन्हें कहा, my dear Radha, मेरी प्रिय राधा, I know that you are suffering from Krishna, remembrance of Krishna. You are suffering from remembrance. Nanda Maharaj said, even remembering Krishna is what? It's a torture for us. मैं जानती हूँ कि आप कृष्ण के स्मरण की पीड़ा में अत्यंत दुखित हैं. That is true. यह सत्य है. Srimati Radharani is remembering राधारानी उनका स्मरण कर रही हैं and she was feeling the pain. और इस प्रकार वो विरह फील कर रही So हैं. Lalita Sakhi said, तो ललिता सखी बोलती हैं, seeing her situation, उनकी स्थिति को देखकर, I don't know how to cure your disease. मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस बीमारी को कैसे ठीक करूं. I know that Visakha can do it. लेकिन मुझे पता है कि विशाखा ऐसा कर सकती हैं. So I want Visakha to teach you impersonalism. तो मैं चाहती हूँ कि विशाखा देवी आपको निर्विशेषवाद सिखाएं. So you forget about Krishna. ताकि आप कृष्ण को भूल जाएंगे. Because क्योंकि the argument was that तर्क किया था she want to teach Srimati Radharani how to forget Krishna. कि वो सिखाएंगे राधारानी को कि कैसे कृष्ण को भूलना है. And the process of teaching how to forget Krishna was also a remembrance of Krishna. और जो तरीका था उनको भूलने का, वो भी भगवान कृष्ण को याद करना ही था. Therefore, Visakha should teach you how to be the impersonal philosophy. तो इसीलिए विशाखा को सिखाना पड़ेगा निर्विशेषवाद तत्व. She said yes. बोली हाँ. Yes. हाँ. So Visakha started to teach her impersonalism. तो विशाखा देवी उनको सिखाने लगी निर्विशेषवाद. But the more she speaks, लेकिन जितना अधिक वो बोलती थी, her interest in Krishna was increasing. राधारानी का जो स्मरण था वो और तीव्र होता रहा था कृष्ण की ओर. Visakha was speaking,
जैसे विशाखा बोल रही थी, instead of her to forget Krishna, भगवान कृष्ण को भूलने के her बजाय remembrance of Krishna increased. भगवान कृष्ण का स्मरण और अति तीव्र हो रहा था। It's Brajavasi love. यह है ब्रजवासी का, Their Krishna consciousness is unquenchable. उनकी कृष्ण भावना में अपार है, अगाध है। So Nanda Maharaj is confessing the same thing that they are all feeling. तो यहाँ नंद महाराज इसको स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रकार की अपनी भावनाओं को। Although it is true, यह सत्य है, but even though the collection of Krishna removes all suffering, now because of our ill fortune, that remembrance creates more suffering. लेकिन अब इस प्रकार का स्मरण करके हमें और दुख होता है, यानी कि स्मरण करके उनका सुख होना चाहिए, लेकिन हमें और दुख होता है। Whenever we remember Krishna, we lose all interest in material activities. जब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, हम समस्त भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। Only by the force of habit do we continue to bathe, हम बस मात्र आदत की वजह से स्नान करते हैं, eat, खाते हैं, drink, पीते हैं and perform other daily activities. और रोज के नियम करते हैं। In such a state, इस स्थिति में we cannot remain alive. हम अब जीवित नहीं रह सकते। So the gopis are not eating to live. They are not eating so they can have life to live. We are eating so we don't die. गोपियाँ इसलिए नहीं खाती हैं कि वो जीवित रह सकें, जैसे हम लोग खाते हैं जीवित रहने के लिए। They are not eating so they can survive. They are eating out of duty. It's वो just a मात्र duty. कर्तव्य परायण होकर खाती हैं, उनका कर्तव्य है। Not because they are hungry. Not because they are hungry. ऐसा नहीं कि उनको भूख लगी है खाएंगी। And they want to put off their hunger. और अपनी भूख को शांत करने के लिए वो नहीं खाती। They are not bathing because they want to be clean. वो इसलिए स्नान नहीं करती कि उनको शुद्ध होना है। It is a natural function of the body. They are simply doing that. ये शरीर का एक कर्तव्य है, कर्तव्य मान उसको करती है। In themselves, they are 100% different. लेकिन वो 100% अलग हैं इन सब चीजों से। When we see the places where Mukunda enjoyed his sporting pastimes, like the rivers, the hills, the forest, he decorated with his feet. Our mind becomes totally absorbed in him. जब हम उन स्थानों को जैसे नदियों, पर्वतों और जंगलों को देखते हैं, जिन्हें मुकुंद ने अपने पैरों से सुशोभित किया था और जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं और लीलाएं की थी, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। This is Brajavasi. यह ब्रजवासी के Everything reminds them about Krishna. उन्हें हर चीज से भगवान कृष्ण की याद आती है। Every single thing is a cause of Krishna remembrance. कुछ भी देखकर कृष्ण का स्मरण होता है। And the sea, hills, remember Krishna. जब देखते हैं पर्वत को, कृष्ण को याद करते हैं। The river, remind them of Krishna. कृष्ण का स्मरण होता है। Forest, remind them about Krishna. जंगल को देखकर कृष्ण You see cows, they remind them about Krishna. गैयों को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है। Even seeing each other, remind them about Krishna. एक दूसरे को भी देखकर कृष्ण की याद आती है। How Krishna play with the gopis, how he play with the cowherd boys. कृष्ण गौरव के साथ खेले थे, Everything is a remembrance. हर चीज में कृष्ण स्मरण होता है। Everything. Maybe look at the cloud. सब कुछ बादल को देखते हैं They remember Krishna. तो वो कृष्ण का स्मरण ही करते हैं। So they are always absorbed in Krishna consciousness. इस प्रकार वो सदैव सत्प्रसन्न कृष्ण भावना भावित होते हैं। That is Krishna consciousness. यह कृष्ण भावना भावित होना है। That we should practice our Krishna consciousness to this level. हमें अपनी कृष्ण भावना में उसका अभ्यास इस स्तर तक करना चाहिए। That we don't see something and become distracted. We see everything, and everything we see will help to remind us about Krishna. कि हमें संसार में कुछ भी देखकर नकारात्मक भाव से प्रभावित ना हो, हमें सब कुछ श्री कृष्ण का ही स्मरण दिलवाए। When you see a dog,
duck. Yes. Duck, not dog. बतख को देखें What should come to the mind? तो क्या मन में आना चाहिए? What should come to the mind? बतख को देख के हमारे मन में क्या आना चाहिए? बोलिए। When you see a dog, वाटर पास्टाइम्स। dog. You understand dog? बतख DUCK Yes, duck. Duck. Yes. D-U-C-K. DUCK बतख Swan. बकस। Yes. You should remember Bakasura. हमें बकस से प्रश्न होना चाहिए। Don't remember a dog. You should remember Bakasura. डक का ध्यान नहीं आना चाहिए, बतख का नहीं, बकस का आना चाहिए। It's Krishna consciousness. यह कृष्ण होना आलोचना है। Right? This is how the Krishna consciousness is developed. इस प्रकार कृष्ण होना आलोचना होते हैं। And is a proof of where we are in our Krishna consciousness. और यह दिखाता है कि हम कहाँ पर हैं अपनी भक्ति में। When we see any object, लेकिन जब कुछ भी देखते हैं we should not remember our sanctification. तो हमें अपनी इंद्रिय भक्ति के लिए याद रहना चाहिए। That means we shouldn't separate anything from Krishna. If you want to remember this, don't separate anything from Krishna. हमें कृष्ण से इतर कोई वस्तु को नहीं देखना चाहिए, संबंध नहीं करना चाहिए। Anything we separate from Krishna is Maya. जो भी हम कृष्ण से इतर देखते हैं वही माया है। So when you see a duck, you should जब remember हम देखते हैं बतख को Bakasura. तो बकासुर राक्षस, Krishna killed Bakasura. भगवान कृष्ण ने कैसे बकासुर को मारा था? Where? कहाँ पर? Where did Krishna kill Bakasura? कृष्ण ने बकासुर को कहाँ मारा था? Yes, but I'm not remembering the forest. I'm remembering Giriraj. It's at the base. It's at the base of Giriraj. गोवर्धन की तलहटी में उन्होंने बकासुर को वध किया था। It's the glory of Govardhan. और यह गोवर्धन की एक महानताओं में से एक Vatsasura? लीला है। वत्सासुर Where? कहाँ मारा गया The था? same at the base of गोवर्धन की Govardhan. तलहटी में the two of them were killed the same day. दोनों को एक दिन मारा गया था। One in the morning, one in the afternoon. ये सुबह दोपहर। So all this thing happened at Gira. I'm diverting to यह Gira. सब गिरिराज जी का समाज हुआ था। And where is Manasa Ganga? Manasa Ganga? मानस गंगा Gira. वो भी गोवर्धन की तलहटी में रहती है। Manasa Ganga is superior to the normal Ganga. Our Ganga is superior. मानस गंगा जो मानसी गंगा है वो गंगा से भी अधिक पवित्र है, Because Krishna and Brahman Dev touched the feet. क्योंकि वामन देव ने उसको छुआ था। So it became purified and purified the world. तो गंगा जी लेकर आती है पूरे संसार But को। Manasa Ganga, the Brajabasis who are the favorite of Krishna bathe in her water every day. लेकिन मानसी गंगा अत्यंत पवित्र है गंगा से भी, क्योंकि ब्रजवासी जो भगवान कृष्ण को इतने प्रिय हैं वो उसमें रोज स्नान करते हैं, It's superior इसीलिए वो अत्यंत महान to है। other Ganga. गंगा नदी से भी। So this is Krishna consciousness, that whenever we see something, that things will help to remind us about Krishna. तो यह कृष्ण भावना में है। जैसे कि हम कोई वस्तु देखें हमें कृष्ण से संबंध निकालना But चाहिए, we have to practice this. और यह हमें Practice अभ्यास करना hearing nicely, then we can श्रवण remember करके this. तब हम स्मरण कर पाएंगे। We don't see something and become distracted. हम कुछ भी देख के उससे प्रभावित ना हो, We see something and become attracted to Krishna. हम कुछ भी देख के श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। This is Krishna consciousness. यह कृष्ण भावना हमारा सुना है। Nanda Maharaj and the cowherd men, women, they are remembering Krishna, how he is moving in forest, in the hills, in the Jamuna, the cows. Everything reminds them about Krishna. नंद महाराज ग्वाले और ग्वालिन वो जब भी कुछ देखते हैं, नदी, पर्वत, जंगल, गाय, उनको सब में श्री कृष्ण का स्मरण हो उठता है। The trees, वृक्ष, everything सब कुछ remind them about the Krishna. भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। How Krishna play with everything,
कैसे कृष्ण हर जगह खेलते थे, सबसे खेलते They are थे। conscious of this. यह उनकी चेतना में This is the meaning of Vrindavan, but that everything reminds us about Krishna. यह है असली अर्थ वृंदावन का, जहाँ पर हमें हर वस्तु वृंदावन में श्री कृष्ण का स्मरण दिलाता है। So Uddhava said, तो श्री उद्धव जी बोलते हैं, as you can remember all those things, जैसे आप हर जगह कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, I can understand that by staying in the house you are remembering Krishna too much. Therefore, to give up dwelling on him, you should go outside and wander along the shore of the Jamuna, tending your cows. क्योंकि आप घर में रह के श्री कृष्ण का स्मरण आपके लिए अत्यंत विरह का काम बन रहा है, इसीलिए आप घर छोड़ के यमुना किनारे जाइए और गायों को चराइए अकेले। Nanda Maharaj responded, नंद महाराज, even that will not help the situation. लेकिन ये करके भी हमारी You know help the situation because everywhere I will look, everything will remind me about Krishna. क्योंकि जब मैं जहाँ भी देखूंगा मुझे कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। Inside or outside, it's the same thing. घर के अंदर घर के बाहर सब बराबर है। I will see everything, I will remember Krishna. मुझे हर जगह कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। I can also see Krishna's footprints. मैं हर जगह कृष्ण के चरणों को देख पा रहा हूँ। So everything. तो फिर Krishna. हर जगह And Krishna specifically left his footprint in some places. और भगवान कृष्ण ने कई जगह अपने चरण चिन्ह की छाप को छोड़ा है। That is deliberate. यह उन्होंने जानबूझकर किया है। So that we can see his presence. ताकि हम श्री कृष्ण की स्थिति को देख सकें। And remember him. और इस प्रकार हम उनका स्मरण कर सकें। Therefore, इसलिए it is compulsory यह हमारे लिए अनिवार्य है that we should visit these places कि हमें इन स्थानों पर जाना चाहिए, because they had the potency to remind us about Krishna. क्योंकि इन स्थानों में बहुत शक्ति है भगवान कृष्ण की याद We दिलाने can का। have the fortune to see Krishna's footprint. और हमारा भाग्य जाग उठेगा भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को देखकर। When Akrura entered Vrindavan, जब अक्रूर जी वृंदावन that प्रवेश was किए, the first thing he did. तो सबसे पहली चीज देखी Krishna's footprint on the ground. उन्होंने देखा कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह, Akrura rolled on it. और श्री कृष्ण उन चरण चिन्हों पर लोटपोट किए अपने This शरीर is को। standard of entering Vrindavan, यह तरीका है श्री वृंदावन में प्रवेश करने का। to take advantage of that. हमें इन सब चीजों का फायदा उठाना है। Do we do like that? क्या ऐसा हम करते हैं? Should practice it? हमें ये अभ्यास करना चाहिए। Yes, should practice. हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। We're coming the other day here. हम जब उस दिन यहाँ आ रहे थे, As soon as we branch, as soon as we branch to Vrindavan, जैसे हम वृंदावन की ओर मुड़े, on the highway, हाईवे से as soon as we branch, जैसे हम मुड़े वृंदावन की ओर, I saw Prabhu offer obeisances. I don't want to steering, he offered obeisances. मैंने देखा गरीब प्रभु प्रणाम किए अपने आप। So my mind went to Akrura. तो मेरा मन गया अक्रूर जी की ओर। This is very good. I didn't say that yet, but I can say यह it. बहुत अच्छा है। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने मन में स्मरण किया। This mentality we should have. यह भावना होनी चाहिए हमें। We shouldn't just be mechanical. हमें बस ऐसे ही यांत्रिक नहीं होना चाहिए। Whatever we hear, let us practice it. जो भी हम श्रवण करते हैं उसका हमें अभ्यास करना होगा। If we don't practice it, it will not become a reality. अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो कभी सत्य नहीं बनकर आएगा। We should hear. हमें श्रवण करना है। And the proof that we have had, और इस बात का प्रूफ है कि हमने सुना है that we remember these things कि हम उनका स्मरण करेंगे, and we practice it. जो भी अभ्यास करेंगे। Nanda Maharaj said, yes, even if I stay in a house, my mind will go to all these things. If I come outside, it will be worse. अगर हम नंद महाराज की ओर, नंद महाराज बोलते हैं अगर मैं घर में रहूंगा तो भी मुझे याद आएगी, और घर के बाहर जाऊंगा तो इससे गति याद आएगी। In other words, अन्य शब्दों में Brajavasis, ब्रजवासी गण, what is their state of consciousness? उनकी चेतना की स्थिति क्या है? Their inside is Krishna, their outside is Krishna. उनका अंतःकरण कृष्ण में है और बाहर भी कृष्ण में है।
which is one of Srimati Radharani's name. और यह एक नाम है श्रीमती राधारानी का, Krishna Mai कृष्णमयी। means इसका अर्थ है inside is Krishna, outside is Krishna. Wherever she sees is कि Krishna. अंदर भी कृष्ण है Krishnamai. और बाहर भी कृष्ण है। She doesn't see anything except Krishna. वह श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं देखती। That's Bijapasi. यह ब्रजवासी चेतना, That's Krishna consciousness. यह कृष्ण भावनामृत है। But it requires practice. लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अभ्यास चाहिए। To give attention to practice. तो हमें अपने अभ्यास में ध्यान देना होगा। And this is what we mean by following the footsteps of acharyas. Following the footsteps. इसी का मतलब होता है आचार्यों के परचिह्नों पर चलना। We should listen to what Nanda Maharaj is teaching. हमें बहुत ध्यान से सुनना है, हमें क्या सिखा रहे हैं। This is the lesson Uddhava has come here to learn. और इसी को उद्धव जी सीखने आए हैं। And he's learning it. और यह वो सीख रहे हैं। We should follow and learn also. और हमें भी इस प्रकार उद्धव जी से सीखना है। Nanda Maharaj, anticipating such a suggestion, explain here. Even this will be unfavorable. On seeing the rivers, seeing the forests and other places where Krishna performs pastimes, our mind becomes absorbed. Manu Tat Atmatam in Krishna. Thus, we remember Krishna more. And the more remembrance of Krishna, the more pain of separation. इसीलिए हमारे लिए यह प्रतिकूल होगा कि हम बाहर जाकर कुछ भी देखें, नदी पर्वत, इन सब से हमारी स्थिति और बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमारा विस्मरण और अति तीव्र हो जाएगा। In my opinion, Krishna and Balaram must be two exalted demigods who have come to this planet to fulfill some great mission of the demigods. Such was foretold by Gargarisi. मेरे विचार से श्री कृष्ण और बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं, जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। Nanda Maharaj here, remember that Krishna and Balaram, although they are children, but they are powerful demigods. नंदा महाराज कह रहे हैं कि यानी कृष्ण बलराम उनके बच्चे थे, लेकिन वो एक शक्तिशाली देवता भी हैं। Because that was what Gargamuni told them. क्योंकि ऐसा गर्ग ने उनसे कहा था। When Gargamuni came here, he told them, जब गर्ग यहाँ आए थे वो ऐसा बोले थे। this your son is equal to Narayan. यह आपका पुत्र नारायण के बराबर होगा। He didn't say he is incarnation. He didn't say he is the source of Narayan. He said he is equal to Narayan. उन्होंने यह नहीं कहा कि ये नारायण के स्रोत है, उन्होंने ये कहा कि ये नारायण के बराबर है। Because if he said ऐसा बोल देंगे he is कि the source of Narayan, कि वो नारायण के स्रोत हैं, he will disturb the feelings of Brajavasis. तो प्रिय ब्रजवासियों की भावनाओं से विरोधाभास हो जाएगा। He's very wise. He's wise. बुद्धिमान से उन्होंने बोला। He introduced himself. Gargamuni introduced himself to Nanda Maharaj that I know everything. गर्गमुनि ने कहा था मुझे सब पता है। So I know who is this boy. मुझे पता है कृष्ण कौन है। He is equal to Narayan. यह नारायण के बराबर है। Yes, because Nanda Maharaj will feel incarnation is Narayan is expansion. What does that mean? How can Narayan be his expansion? This boy. तो क्योंकि वो नंद महाराज कैसे बोलेंगे कि नारायण का अवतार है, ऐसे कैसे हो सकता है? They don't hear this philosophy. क्योंकि वो इन सब को सुनने में रुचि रखते हैं। It's not their philosophy. You don't speak this to Brajavasis like that. यह सब विचारधारा को नहीं जानते। Krishna is Narayan. कि कृष्ण नारायण है। They will never hear it. वो यह नहीं सुनते कभी। Because the prem has blocked their ears. क्योंकि जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसके कारण उनके कान बंद हो चुके हैं। When Uddhava tried it, और जब उद्धव ने प्रयास किया, he got chastised by some Mother Yasoda.
तो उनको माता पिता से डांट पड़ी। Yes. After all, Krishna and Balaram killed Kamsa, who was as strong as 10,000 elephants, as well as wrestlers Chanura and Mushtika, and the elephant Kubalapid. They killed even all sportingly, as easily as a lion disposes of small animals. और अंततः भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कोरियापीड़ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सब को उसी तरह खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। This is true. Kamsa has the strength of 10,000 elephants. यह सत्य है कि कंस के पास 10,000 हाथियों का बल था। And he has all these wrestlers who are as powerful, almost equal to himself. और जो इनके पहलवान थे वो भी कंस के ही आसपास के बराबर पहलवान थे। All are his friends. यह सब उनके मित्र थे। And they became friends और ये मित्र बन गए थे। when they tried to convince him to give up his demonic activities. जब उन्होंने प्रयास किया कंस को उसकी दानवता को छुड़वाने का, That is Kamsa. तो कंस ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। Very powerful. बहुत प्रभावी। You cannot advise him. आप उसको कुछ साथ देते। Either you support him or he will convert you by force to become one of his associates. या आप उसको साथ दो, नहीं तो आपको हरा के अपना दास बना लेगा। So he got all this इस प्रकार उसको associate with him. उसके पास उसको मिला। And in a material sense, भौतिक रूप से he considered himself to be very, very powerful. वो अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली मानता था। So he was thinking, वो सोचता था, nobody can kill me मुझे कोई नहीं मार सकता because I have all the powerful personalities क्योंकि मेरे पास बहुत शक्तिशाली लोग हैं who have never faced defeat before in their life. जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है। They have never experienced defeat in their life. उन्होंने कभी हार नहीं फेस की है So जीवन में। nobody can do me anything. तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। And he was sending them one by one to Krishna. और इस प्रकार एक करके वो कृष्ण को मारने के लिए भेजता गया। And Krishna also was killing them one by one. और भगवान कृष्ण भी एक करके उनको मारते गए। Kamsa was sending, कंस भेजता था, go. जाओ, They will come here, they will not return. लेकिन वापस नहीं आते थे। Then one day, एक दिन Narayana advised him, नारद जी बोले कंस को, my dear friend, मेरे प्रिय मित्र, don't you see you are making mistakes? तुमको लगता है तुम गलती कर रहे हो? All your friends you send, they never return back here. तुम्हारे सब मित्र वृंदावन जाते हैं, वापस लौट के आते हैं। Because क्योंकि they are going to the enemy's camp. क्योंकि वो अपने शत्रु के पास जा रहे हैं। Now, अब you invite the enemy to come to your camp. तुम अपने शत्रु को अपने यहाँ बुलाओ, अपने एरिया में। In this way, इस प्रकार you are the supreme. तुम यहाँ You can easily kill him. और तुम आसानी से उसको मार सकते हो। Kamsa says, oh, this is very nice. मैंने बोला, ये बेटी सलाह है। Why? You are my best friend. नारद जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी बुद्धि कम नहीं। Why you never give me this advice since? किसी ने हमको ये ज्ञान नहीं दिया पहले। Anyway, आप पहले नहीं बताया। yeah, this is very good. ये बहुत अच्छा है। So, what does Krishna like? तो कृष्ण को क्या पसंद है? He likes to play. उसे खेलना बहुत पसंद है। He like game. हाँ, उसे खेलना पसंद है। So, let us introduce this game. चलो फिर ये पहलवानी का खेल खेलते हैं। They will simply come to watch. No, children would like to play. ये छोटे बच्चा है, देखने के लिए आएगा, खेल खेलने के लिए। In this खेल way, देखने के लिए। you easily kill Krishna. और इस प्रकार कृष्ण को आप मार देना। It's Narada, नारद जी बोले। very unusual person. नारद जी बहुत ही अलग व्यक्ति हैं। He's not there, he's not here.
वो ना उस पार्टी के नहीं इस पार्टी के He has no friend with anybody, he has no enemy with anybody. उनका कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है। He is on his own. वो अपने आप में रहते हैं। So Kamsa became very, very interested in a wrestling match, and it's, तो कंस की इच्छा जाग he गई invited two boys to come here. पहलवान Yeah. का खेल करने में। And then he will arrange for them to be killed. तो उसने पूरी व्यवस्था कर ली कि कैसे इन दोनों बच्चों को मारना है। In this way, इस प्रकार he will not have to kill Krishna himself. इस प्रकार वो कृष्ण को खुद नहीं मारेगा। His wrestler will take care of Krishna. उसके पहलवान कृष्ण को And the मारेगा। game is over. और बस खेल खत्म हो जाएगा। So he sent a crew that go and bring the boys. इसलिए उन्होंने अतुरु जी को भेजा कि बच्चों को लेकर आओ। It was due to Narada's advice. यह नारद जी की सलाह के काम हुआ था। So Krishna was invited to come. तो कृष्ण को बुलाया गया। So they came and took care of Kamsa. Hare Krishna. और इस प्रकार They took care of him वो आए और कंस का हरि बोल very nicely. So here, Nanda Maharaj said, although Kamsa was so powerful with all his elephant, with his charuna and chanura and mustika, with all others, Krishna killed them exactly the way a child plays with toy. यानी कि कंस और उसके पहलवान और उनके साथीगण बड़े बलशाली थे। They were doing. लेकिन कृष्ण ने उनको आसानी से मार डाला खेल खेल में। There was no exaction. कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। Krishna just did it like a child's play. जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे खेल खेल में उसको खत्म कर दिया। कुछ amazed Kamsa. He was amazed. और इस बार कंस को आश्चर्य हुआ। When Kamsa was told that his जब कंस को बताया गया elephant is dead, कि उसका हाथी कोरिया पेड़ मर गया है। it was very difficult for him to believe. How is it possible? उसके लिए विश्वास करना अत्यंत कठिन था। ऐसे तो होता है। With the ease of a royal elephant breaking a stick, Krishna broke a powerful giant bowl 3 talas long. He also held a mountain aloft for 7 days with just one hand. जिस तरह आसानी से कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह भगवान कृष्ण ने 3 ताल लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वह 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ से ऊपर उठाए रहे। धन्यवाद बोल रहे हैं। Krishna broke a bowl 3 talas long, and with one hand, just his left hand, Krishna held a golden hill for 7 days. कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे धनुष को तोड़ डाला और वो 7 दिनों तक पर्वत को एक हाथ से ऊपर उठाए रहे। A palm tree is a measurement of 90 feet. ताल का वृक्ष 90 फुट के बराबर होता है। Thus, the great bow Krishna broke was 270 feet. इस प्रकार 270 feet. जो बहुत लंबा धनुष था जिसको उन्होंने तोड़ा था, इसकी लंबाई थी 270 फुट। Here in Vrindavan, Krishna and Balaram easily destroyed demons like Pralamba, Denuka, Arista, Tinavarta, and Baka, who had themselves defeated both demigods and other demons. इसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलंब, धेनुका, अरिष्ट, तृणावर्त तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। Sukadeva Goswami said, thus intensely remembering Krishna again and again, Nanda Maharaj, his mind completely attached to the Lord, felt extreme anxiety and fell silent, overwhelmed by the strength of his love. सुखदेव गोस्वामी ने कहा, It's amazing.
इस तरह बारंबार भगवान श्री कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतः अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। Becoming completely attached to Krishna by remembering the Lord's majesty, Nanda Maharaj thought, "Oh, my misfortune! इस प्रकार नंद महाराज बोले, यह मेरा बहुत दुर्भाग्य है। I have been separated from my son, who is the ocean of powerful qualities." कि मेरा मेरे पुत्र से विरह हो गया है, जो अत्यंत महान गुणों वाले हैं। Nanda Maharaj's attachment to Krishna was such that even in appreciating Krishna's great power as the Lord, his personal relationship with Krishna did not weaken as it did with Vasudeva. नंद महाराज की आसक्ति श्री कृष्ण में इतनी अधिक थी कि इस प्रकार विवरण करते हुए उनका भगवान कृष्ण जो संबंध था वह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। Nanda's mind remained attached to Krishna with undiminished firmness. और इस प्रकार नंद महाराज शांत हो गए। With his mind attracted to Krishna in this way, Nanda Maharaj became overcome by the sway of paternal affection, prema prasara vivala. और नंद महाराज भगवान कृष्ण की मुस्कान का स्मरण करते हुए इस प्रकार उनमें आसक्त हो गए। In the presence of the supreme prema of Nanda, who, like a Gatsya, swallowed the whole ocean, what is the significance of a whole ocean of opulences? और इस प्रकार नंद महाराज Agatsamuni swallowed ocean. जिस प्रकार अगस्त मुनि ने पूरे सागर को पी लिया था, Nanda Maharaj also remembered Krishna's opulence. नंद महाराज भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को याद करके Still, फिर भी his prema was never changed. लेकिन उनका प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। His prema remained intact, उनके इन सारे ऐश्वर्यों को जानने के बाद भी उनका प्रेम कम नहीं which हुआ, is different from Vasudeva. जो कि अलग है वासुदेव से। Vasudeva prema is not high. वासुदेव का प्रेम उतना He उच्च has नहीं he has also Vatsalya prema, है। वासुदेव के पास भी वात्सल्य प्रेम है, but the Nanda Maharaj Vatsalya prema is extreme. लेकिन नंद महाराज का वात्सल्य प्रेम अति तीव्र है। So much so that इतना है even when they saw what Krishna did as the supreme personality of Godhead, their love for Krishna never slightly कि changed. जब भी वो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य कार्यों को देखे तब भी उनका प्रेम कहीं भी कम नहीं हुआ। When Brahman Dev broke the universe and brought Ganga here, everybody offered obeisance. जब वामन देव ने इस ब्रह्मांड को भेद के गंगा को लाए, सब उनको प्रणाम करना। This is Supreme Lord. यह परम भगवान है। Krishna did the same thing. भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही With किया। the same toe, उन्होंने उसी he अंगूठे broke से the cat. उन्होंने सबको सबको मार डाला। Nobody offered obeisance to him. एक कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। Nobody remember, oh, this is Supreme obeisance. किसी ने Nobody. याद नहीं किया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। Even when the children said, we saw him. यानी कि बच्चे बोले He हमने broke देखा the है, cat. कृष्ण तोड़ा है शंका को। Do you believe children talks? लेकिन लोग बोले अरे इन बच्चों की बात कौन मानेगा? This is children talking. ये तो बच्चों की बात है, What बचकानी is बात the है। strength of children talking? It's just childish. ये बच्चों की बातें हैं, इनमें कोई विश्वास नहीं करेगा। That is Brajabasi's love. यह ब्रजवासियों का प्रेम है, Even though they could see, यानी कि वो अपने आप को देख पा रहे थे, their prem overcome लेकिन the Aishwarya. लेकिन प्रेम के कारण उनको ऐश्वर्य की बिल्कुल भी याद The नहीं है। opulence of Krishna. They don't see the opulence of Krishna. वो कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं देख पाए। Their opulence is Brajabasi's son, which is Chintamani, उनका ऐश्वर्य ये ब्रज की भूमि है, जो चिंतामणि है, and the Kalpavriksha tree, और यहाँ के कल्प वृक्ष के हैं, which you find only in Vrindavan.
जो कि हम वृंदावन में बात देखते हैं, one leaf. एक पत्ता. There is no opulence in the world that can purchase one leaf, just one leaf, not the इस whole संसार tree. का one. ऐश्वर्य वृंदावन के वृक्ष की एक पत्ती को भी नहीं खरीद सकता. That is how heavy इतना branch is. इतना बलशाली है यहाँ का प्रभाव वृक्ष का. Branch, weight, वृक्ष का जो प्रभाव है very heavy. बहुत प्रभावशाली है. Vrinda, वृंदा, Vrinda. Tulsi, तुलसी, वृंदा, Tulsi, one leaf. तुलसी की एक पत्ती. Nobody can purchase it. No opulence can purchase one Tulsi leaf. इतना भी ऐश्वर्य उसको नहीं खरीद सकता. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Okay. Comment? किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न है? I have one comment and a question. Okay. So, comment is you made sure my understanding, my understanding is correct or not. So that is my comment area. From authentic disciplic successions, from Vishnu to Narada Muni, like Vishnu says that Naham Tishtanti Vaikunthe Yogi Nam Hridayeva Tatra Tishtanti Naradaha Yad Gayanti Madhbhakta. And from there, Srila Prabhupada manifested Vrindavan in every corner of the cities. And Maharaj also saying that we can manifest Vrindavan everywhere. So, if we can manifest Vrindavan everywhere, so every citizens or every devotees of Krishna consciousness in every corner of the world, they can become the Brajavasi by constantly following this guidance through the proper disciplic successions and the authentic way. Everyone can become a Brajavasi. So it's not like only physically we stay in Vrindavan and in Brajavasi. That is my comment. So it's, Yes. my understanding is correct or not? Yes, correct. Srila Prabhupada said, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं every devotee हर एक भक्त in Krishna consciousness कृष्ण भावनामृत में should become a Goswami. हर एक कृष्ण भावना मोहित भक्त को गोस्वामी बनना चाहिए. All of us. हम सभी लोग. Assignment Prabhupada gave to us. यह हमें कार्य मिला है प्रभुपाद जी से. Become क्या? Goswami. गोस्वामी बनना है. So if you are a Goswami, अगर आप गोस्वामी हैं wherever you are, तो आप जहाँ भी रहेंगे what is that? वो क्या होगा? Goswami. गोस्वामी रहेंगे. We have out of the 64 principles, 64 नियमों में से 4 special or 5? It's 4 special, 5 special, 5. 5 प्रमुख हैं. Sadhu, साधु संग, Bhagavatam, श्रीमद् भागवत श्रवण, holy name, नाम जप, deity, अर्चा विक्रय and land. और वेदभूमि. 5. 5. Up to these 5, इन 5 में से which is best? सबसे महत्वपूर्ण उत्तम कौन सा है? Sadhu Sangha. First is Sadhu Sangha. Sadhu. साधु संग. Sadhu. साधु. You agree? सब लोग बोले साधु संग. Yeah. Thank you. धन्यवाद. Where the sadhu is, जहाँ पर एक साधु है, Bhagavatam is there, वहाँ right? पर अपने आप भक्त पढ़ी जाएगी, बोली जाएगी. वहाँ पर अपने आप अर्चा विक्रय की पूजा होगी. The deity is there, अर्चा विक्रय होंगे. वो नाम जब अपने आप होगा. is there, and और that is Vrindavan. इस प्रकार वहाँ वृंदावन बन जाएगा. One place, एक जगह में. that's sadhu. यह साधु है. Prabhupada said, all of us. He didn't sannyasis. तो Prabhupada प्रभुपाद जी didn't बोलते say हैं इस्कॉन के सारे भक्त, मां सन्यासी नहीं. every devotee should become Goswami.
इस्कॉन के हर एक भक्त को गोस्वामी बनना चाहिए। See, if we don't see the goal, अगर हम अपना लक्ष्य नहीं देखेंगे we will not have direction. तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। No direction. हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। We must have a goal. क्योंकि हमें लक्ष्य होना चाहिए। Because everything is for a purpose. कि हम जो भी कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य है। Krishna created this world for a purpose. भगवान कृष्ण ने इस भौतिक संसार की सृष्टि भी की है एक लक्ष्य से। He gave the scripture for a purpose. वो शास्त्र को दिए हैं लक्ष्य के साथ। Prabhupada established this movement for a purpose. प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की एक लक्ष्य के साथ। We should join with the purpose. और हमें भी इस्कॉन को ज्वाइन करना है एक लक्ष्य के We साथ। have forgotten the purpose. लेकिन हम धीमे धीमे अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। So most of us are just hanging on. तो हमने से बहुत सारे लोग बस अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। It is dangerous. यह खतरनाक है। We should not hang on. हमें हैंग ऑन नहीं करना है। We should actually exist. हमें वाकई में इस आंदोलन में प्रवेश करना है। To actually exist, और इस आंदोलन we को have करने a के लिए purpose. We have a purpose. हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। So we should be purpose driven. और इस प्रकार हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। Then तब there is future. हमारा भविष्य अति सुंदर होगा। Many of us are hanging. I'm repeating my word. We are hanging. हम में से बहुत सारे लोग बहुत कमजोर हैं। Don't hang here. सिर्फ हैंग मत करिए हम पर। Let us exist हमें वाकई में अंदर प्रवेश करना with the होगा। purpose. लक्ष्य के Have a साथ, goal we are looking up to. जिस हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसके साथ। Does it make sense? Yes. क्या आप समझ पा रहे हैं? We are not thinking. Let us think. हम इसको कभी सोचते नहीं हैं, हमें इस पे चिंतन करना होगा। So Prabhupada has given us the vision. प्रभुपाद जी ने हमें एक विजन दिया है। Become a Goswami. That's the purpose of coming here. Is to become a Goswami. इसलिए हम इस्कॉन में ज्वाइन किए हैं। If you don't become a Goswami, अगर हम गोस्वामी नहीं बनते, we become a disturbance. तो हम इस आंदोलन के लिए कुछ गलत कार्य कर बैठेंगे। Check and see आप देखिए अपने आप को if we are approaching Goswami or we are disturbance. कि हम गोस्वामी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ और काम कर रहे हैं। If you are not doing that, अगर हम यह नहीं कर it रहे हैं, means we are hanging. इसका मतलब हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। But we should not hang here. लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे नहीं रहना है। Let us exist हमें इसमें वाकई में अंदर प्रवेश करना है with the purpose. एक लक्ष्य के साथ। Make sense? Yes. समझ में आया? Okay. Question. Yes. So my question is, from the last session, last class, Maharaj mentioned about the, like last class Maharaj mentioned about the karma, right? Karma Mimamsha Maharaj was speaking, and Maharaj given the example about the Dhruva Maharaj. That Dhruva Maharaj in the last life was the Brahman, and then this life Dhruva Maharaj became as a Kshatriya. So he had the two quality from the last life. He got the Brahmanical quality. So my question is, we know from Bhagavad Gita that those are in the Sattva-guna, they will go in the higher planets, and the Brahmana is considered as Sattva-guna. Right? So how come Dhruva Maharaj from the Sattva-guna he came, because Kshatriya is the Rajo-guna. Yes. Even although there is a Paramahamsa also in the Kshatriya. So how from the Brahmanical quality he came? Is the purpose of divine purpose or for some any other reason? प्रभु जी का प्रश्न है कि ध्रुव महाराज पिछले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और इस जन्म में वो क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, इस प्रकार उनका प्रमोशन होना चाहिए ऊपर के लोगों में। तो यह कैसे हुआ कि वो अगले जन्म में ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए? इसके पीछे क्या उद्देश्य था भगवान का? Yes. Good question. अच्छा प्रश्न है। Brahmana should become Vaishnava. ब्राह्मण को आगे बढ़ के वैष्णव बनना चाहिए। That's the next stage. You become Brahmana. यह उनका अलग स्तर होता है Vaishnava. कि ब्राह्मण का प्रमोशन होता है वैष्णव रूप में। But Dhruva Maharaj didn't go to Vaishnava. लेकिन ध्रुव महाराज वैष्णव नहीं बने, Came to Kshatriya. वह क्षत्रिय बनकर आए। That means he fell down.
इसका मतलब कि ध्रुव महाराज का पतन हुआ ब्राह्मण से, came down. वो नीचे आए, But लेकिन he has a fortune. उनका सौभाग्य था, Because Krishna promised, कृष्ण ने ये वादा किया था "Ame bhakta pranashati." कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। Even if there is ups and downs, अगर कभी हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होता भी है, a devotee is protected तो एक भक्त की रक्षा होती है, because of what the devotion we are trying to do. क्योंकि उस भक्त ने जो भक्ति की है उसकी शक्ति So है। Krishna appreciated it. तो कृष्ण ने सराहना की You are appreciating a prince's life. कि क्योंकि आपको राजसी परिवार में रुचि है, So test it. ठीक है, Test it. अगले जन्म में आप क्षत्रिय बन के राजा बन जाओ, So that तो when you see the end, ताकि आप जब आप राजा बनोगे अंत में, when you take to devotional service, आप भक्ति को लोगे, you will not feel that you are missing something. तो आप सब कुछ पालोगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, So he didn't mix anything. आपको भक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने कुछ खोया नहीं, So he got a bigger promotion. तो वो राजा बने और बाद में भक्त बन गए। He had the fortune to meet a pure devotee. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके सौभाग्य उनका उदय उठा By एक शुद्ध भक्त के मिलने से, By his association, और उनके संग से he got to Krishna उनको कृष्ण मिल गए and went back to Vrindavana. और भगवत धाम चले गए। So many things to learn inside. तो बहुत कुछ सीखने को है। So my last question is for today. We heard from Bhagavatam and many pastimes here about Krishna's complexions. Krishna complexion. Krishna's complexion Mm. is compared with the cloud rose, it's compared with the blue lotus. And then we see in 11th canto Krishna himself speak with Uddhava about the deity worship, about the deities. And in the deity there are, we see sometimes there is a different complexions of the deities also, right? And in the Braja Leela, like just now we heard that, how Nanda Maharaj and other Yashoda Maharaj, gopis, how they remember. They mostly remember Krishna in a particular complexions. So how we will understand this when we, see deity in a, golden form, or in the Gauda form, Krishna's deity, the whitish form. So how we can relate that in a, Braja Rasha, Vrindavan Rasha. भगवान कृष्ण का एक रंग है, एक रूप है, हम लोग ये देखते हैं। तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ये ज्ञान दिया है आचार्य विग्रह के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में। हम यहाँ आज पढ़ रहे थे कि नंद महाराज और ब्रजवासी गण वो लोग भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो वो जरूर किसी एक पर्टिकुलर रंग रूप का स्मरण कर रहे होंगे। लेकिन हम ये भी देखते हैं, हम बहुत सारे विग्रह देखते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोल्डन होते हैं। तो हम कैसे इनको जाने? हमारा चिंतन कहाँ होना चाहिए? For Brajavasi, ब्रजवासियों के लिए Shyama Sundar. श्याम सुंदर रूप, As the form manifested here, Shyam Sundar. भगवान कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में आते हैं। Lord Brahma confirmed that. और ये ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं। Shyamam Tribhangam Letam Yata Prakasham. श्यामम त्रिभंग ललितम, It's Shyam. श्याम रंग। Jam Shyama Sundar Chitta Saguna Rupa. This original form of Krishna. यह भगवान का वास्तविक रूप है, It's original. श्याम सुंदर। And you see, Mother Yashoda is painted. How is it माता painted? यशोदा का आपने रंग देखा है कैसा है? What's her picture? What's her माता color? यशोदा की पिक्चर देखी है आपने, कैसी रंग की है? Yashoda my color. What's her color in the picture? यशोदा माई का रंग That is wrong. वो गलत है सब। Yashoda Mai is black. He is not golden.
यशोदा माई भी श्याम वर्ण की हैं। श्याम Misrepresentation. It's misrepresentation. यह गलत है कि उनको हम दिखाते हैं गोरा रंग। Chaitanya Mahaprabhu is golden. चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण कलर के हैं। Because that is Srimati Radha's color. क्योंकि श्रीमती राधा की कांति को लेकर आए हैं। All our scriptures, हमारे शास्त्रों में lightning, ये लाइट the clouds, the light in the जो cloud. बादल में चमकते The हैं, cloud is Krishna, the light is Srimati Radharani. तो बादल कृष्ण है और बादल जो बिजली है वो श्रीमती राधारानी है। White is Balaram. और बलराम जी सफेद रंग के हैं, श्वेत। There's one temple here in India. एक मंदिर है भारत में। The spiritual master वहाँ पर गुरु ने as a disciple to have Shyam deity, Krishna is Shyam. गुरु ने शिष्य को बोला कि एक श्याम रंग की मूर्ति रखो कृष्ण की। But that devotee, लेकिन वो शिष्य ने his devotion is not mature. क्योंकि उनकी भक्ति परिपक्वता वो नहीं पहुंची थी। Because of his position, his platform, his level, उनका पद उतना ऊंचा नहीं है भक्ति में। he didn't make Shyam. तो उन्होंने श्याम रंग का पेंट नहीं किया। But he did something, is he made white. उन्होंने श्वेत रंग का पेंटिंग कर दिया, सफेद रंग। Because for him, क्योंकि उनको how can God be black? उनको सफेद पसंद था, भगवान काले कैसे होंगे? Position of Krishna is not based on our understanding. Krishna does not depend on us. भगवान कृष्ण हमारी समझ से परे हैं। He is what he is. वह जो है वह है, And we cannot change it. हम उसको बदल सकते नहीं हैं। So this devotee's lack of maturity, तो ये भक्त ने अपरिपक्व रूप में he didn't make the Shyama Sundar form. उन्होंने श्याम सुंदर फॉर्म नहीं बनाया, He made white deity. उन्होंने सफेद रंग का डीटी बनाया, But at least it was tinged with black. क्योंकि उसमें हल्का सा श्याम रंग मिला हुआ था। Check our temple and how that deity, you understand the temple. आप अपने मंदिरों को देखिए, आप समझेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। I don't want to mention the name. This is मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, but this is आप लोग immaturity. और यह अपरिपक्व रूप से हुआ था। This immaturity should not be. ऐसा नहीं होना चाहिए। But that is Krishna's form, original form. और यह कृष्ण का असल रूप है, श्याम सुंदर। So anyway, in another way, अन्य रूप से we have different tastes. हम सबका अपना अपना रुचि है, Therefore, इसलिए Krishna manifested different forms, different incarnations to भगवान satisfy our कृष्ण taste. अन्य अन्य रूपों में, अन्य अन्य अवतारों में हमारी इच्छाओं की तुष्टि करने के लिए प्रकट होते हैं। Therefore, इसलिए the varieties will be there. बहुत सारे रूप हैं भगवान के। Hare Krishna. विष्णु Last question. अंतिम प्रश्न। Hare Krishna Maharaj, thank you very much for the enlightenment. I was just having a conversation with a friend before the lecture, and so I want to ask you this question. With regards to young disciples trying to gain access to the spiritual master. Young disciple trying to have access Because to the spiritual master. oftentimes you mentioned that we have not joined this movement to become GBCs or presidents or whatever position we have. So sometimes the inclination to progress speedily on the path of the rank and file, it comes when the disciple is unable to gain access to his spiritual master. And it happens sometimes due to the fact that maybe the spiritual master has a huge number of disciples, or the spiritual master's senior disciples, they kind of stand like a medium in between the younger one and the guru. So the disciple wants to meet the guru and they said,
Well, we've been trained by the spiritual master for so many years. You understand it's valid. So whatever inquiries you need, you let us know and we'll attend to it competently. So for some disciples who are, have the extra greed, then they begin to feel that, okay, so if I'm able to get some kind of good ranking position, then like this other senior devotees, I can have contact with my Guru Maharaj. And I want to have contact with my Guru Maharaj. So like this, they also become deviated from the path of exclusive praying. Yes. And they begin to scheme Yes. how to rise in rank and file. Right. So how do you address this situation? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम देखते हैं अपने इस्कॉन के समाज में ऐसा कि गुरु वर्ग के पास अत्यंत शिष्य हैं और सभी शिष्य उन तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन गुरु ने जो अपने शुरुआती के शिष्यों को, जो सीनियर डिवोटी हैं, उनको ट्रेन किया है और उनको ऐसा लगता है कि वो गुरु के मनोभाव को जानते हैं। तो वो जो छोटे भक्त होते हैं उनको गुरु से मिलने से रोकते हैं, बोलते हैं हम आपको समझाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे। अब ये छोटे भक्त होते हैं, इनको क्या लगता है कि हम तो अपने गुरु से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाएंगे, तो हम कुछ बड़ा काम करते हैं कि जब हमको बड़ा पद पदवी मिलेगी तब गुरु की नज़र हम पर जाएगी और स्वभावतः हमें उनसे मौका मिलेगा उनको मिलने का। लेकिन होता ऐसा है कि हम आए थे इस्कॉन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम भटक जाते हैं पद और पदवी को पाने के लिए, क्योंकि हमको गुरु से मिलना है। इसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? Yes, this is a very big disease. एक बड़ी बीमारी है, A big disease that is eating up. यह एक बड़ी बीमारी है जो हमको खा रही है। The pure devotees will try to establish a process to help everyone. शुद्ध भक्त एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे सबका लाभ हो। But because we also don't have qualified disciples, लेकिन हमारे पास उत्तम कोटि के शिष्य नहीं हैं they will contaminate the system. और वे इस सिस्टम को खराब करते हैं फिर। Therefore, it gives room to many devotees to become insecure and they try to hang on to so many things. In this way, like you said, missing the goal. इसलिए कई सारे भक्त भयवश वो पद और पदवी की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। So this counseling system, तो यह जो हमारा सिस्टम है काउंसलिंग का, it is good. ये अच्छा है, But we don't have qualified devotees in that system. लेकिन हमारे पास योग्य लोग नहीं हैं उस सिस्टम में काउंसलिंग करने के लिए। They are really destroying many devotees' faith. और बहुत सारे भक्तों की श्रद्धा को वो खत्म कर देते हैं, Because they don't carry the mood of the spiritual master. क्योंकि वो अपने गुरु महाराज के मूड और भाव को समझ नहीं पाते। They have their own agenda. They have their own agenda. They have their own plan. उनका अपना खुद का एक मत और खुद की अपनी एक योजना हो जाती है। Just few days ago, कुछ दिन पहले a devotee told me एक भक्त ने मुझे बताया, he wrote a letter to his spiritual master. उन्होंने अपने गुरुदेव को एक पत्र लिखा। The medium people, जो बीच के लोग थे, they took the letter. उन्होंने पत्र को लिया, They didn't give it to the person the letter is meant to, उन्होंने गुरु को नहीं दिया, but they spread the letter among themselves. लेकिन वो जो पत्र में लिखा था ये बात सबको पता चल गई। Does this solve the situation? Did this solve the situation? तो क्या इससे कुछ लाभ हुआ उस भक्त को? The guru didn't get the letter, गुरु को पत्र नहीं प्राप्त हुआ, but the disciple got it and they spread it among themselves. लेकिन बीच के शिष्य सब उस बात को जान गए, ये बात को, And they were giving their own mundane comment.
और इस प्रकार वो अपना अपना मत विचार देने लगे। which destroyed the faith of the disciple. Not helping him was destructive. और इस प्रकार उस भक्त का जो श्रद्धा था वो खत्म हो गया, उसको सहायता नहीं प्राप्त हुई। So that is not bona fide. तो यह प्रामाणिकता नहीं है, Destructive. यह खतरनाक है, विनाशकारी है। There are many cases like that. ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। One day I saw one lady was crying. एक वैष्णवी रो रही थी। I said, what is the problem? क्यों रो रही हैं आप? She said, see those people, they're my god brothers and god sisters. ये सब मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं। I have a meeting because our guru is coming. मीटिंग हो रहा है क्योंकि हमारे गुरु आने वाले हैं। I'm not there मैं मीटिंग में नहीं हूँ because I know कि मुझे पता है if the guru is going to come, जब गुरु आएंगे I will never see him. तो मैं तो उनसे मिल पाऊंगी नहीं। I will never talk to him. मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी They are all in the front blocking me. क्योंकि जो हमारे सीनियर ब्रदर हैं वो आगे रहेंगे। So what is the benefit of my attending the meeting? तो फिर मीटिंग में रहने क्या फायदा? That's why I'm not there. इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। This is going on. This is happening. तो यह हो रहा है। This is dangerous. यह खतरनाक है। So we are making devotees feel insecure. तो इस प्रकार हम भक्तों को इनसिक्योर कर देते हैं। And they want to hang on to something to become secure. और फिर इस प्रकार भक्त कुछ ना कुछ जीवन में पाना So चाहते हैं। let me try to get position. और फिर वो पद पदवी की ओर होड़ करते हैं। Because the qualification to get to Guru is to have managerial position. क्योंकि उनको पता है कि अगर गुरु के सामने आना है तो कोई बड़ा पद होना चाहिए। What is the problem with that? इससे समस्या क्या है? The problem is that spiritual position, it doesn't make sense. It's material position, that is. इससे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारी आध्यात्मिक पोस्ट है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है और भौतिक पद में पद का मिलना है वो लोग देखते हैं। So the energy now is towards that. तो जो हम शक्ति लगाते हैं अपनी, My security is to get the position. हम अपनी पूरी शक्ति को पद प्राप्त So करने के लिए लगाते हैं I can survive. ताकि मैं अपना जीवन अच्छे से And चलाऊंगा। that becomes the goal of my Krishna consciousness. और यही हमारी कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य बन जाता है। This is wrong. यह गलत है, We shouldn't do this. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। So, इसलिए devotees who have this situation should not lose their balance. जो भक्तों की ऐसी स्थिति है जो अपने गुरु से नहीं मिल रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। Because Krishna is not pleased by our material arrangement. क्योंकि कृष्ण हमारे किसी भी भौतिक तरीके से प्रसन्न नहीं He is होते, pleased by spiritual. वो हमारे आध्यात्मिक शक्ति से प्रसन्न होते हैं। So let's continue to practice तो हमें अपना आध्यात्मिक अभ्यास करते रहना है nicely. अच्छे से, And और Krishna will find a way for us to penetrate. और कृष्ण तरीका निकाल लेंगे, वो कहीं न कहीं से हमारे हृदय में आ जाएंगे। That faith we should have यह श्रद्धा हमें होनी चाहिए and continue to pursue our Krishna और consciousness. हम अपने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहें, अभ्यास करते Krishna रहें will make a way for us. और हम आगे बढ़ते रहेंगे। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you, Maharaj. Maharaj, I have two small questions. One is, somebody asked me that Tulsi is worshipable, so why do we burn the Tulsi stick? Because we don't put on the hot stove also, we don't drink also. Okay. And the second is, many devotees of our congregation, they have started listening to Premanand Maharaj. He is becoming very popular also, and ISKCON devotees are going for the darshan and everything. So shall we stop them and say no, or shall we allow them, okay, you come here also, go there also? What should be our strategy for that? Okay. Thank दो you. प्रश्न है माता जी के। पहला प्रश्न है कि हम जानते हैं कि तुलसी माता पूजनीय हैं, तो हम तुलसी की लकड़ी को जलाते क्यों हैं लैंप ऑफरिंग के समय। और दूसरा प्रश्न है कि बहुत सारे भक्त श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं गाइडेंस के लिए, दर्शन के लिए, तो क्या हमें भक्तों को बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है आप वहाँ भी जाओ, ISKCON में भी जाओ, या हमें उनको सलाह देना चाहिए कि नहीं वहाँ मत जाओ? Tulsi Devi
is very, very special. तुलसी देवी बहुत खास है, बहुत महान है। Krishna will not eat any food that he doesn't see Tulsi. कृष्ण किसी भी भोजन को नहीं स्वीकार करेंगे अगर वो उसमें तुलसी को नहीं देखेंगे। When Krishna see Tulsi Devi, जब कृष्ण देखते हैं तुलसी है, only will he accept it. तभी उसको स्वीकार करने में चेष्टा करेंगे। Therefore, इसलिए we offer Tulsi to Krishna. इसलिए हम तुलसी को भगवान को अर्पित करते हैं। And और when Tulsi stick is offered to Krishna, जब तुलसी की लकड़ी भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है, that offering becomes 100 times better. वह अर्पण 100 गुना अधिक बढ़ जाता है गुणवत्ता में। So it is offering. तो यह अर्पण ही है। And that becomes the perfection of our. यह भगवान की सेवा ही है, इससे हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। This in the Purana, यह पुराण में दिया गया है। not whimsical, it's in the Purana. यह हम लोग मनमानी नहीं कर रहे हैं। If you are doing fire sacrifice अगर आप यज्ञ करते हैं, and you put Tulsi there, उसमें आप तुलसी डालते हैं, लकड़ी, all the wood which we use become useless, but that is the perfection of that जो भी technique, आपने लकड़ी इस्तेमाल की वो सब बेकार उसके सामने है। right? तुलसी की लकड़ी सामने, The sacrifice becomes complete, और वह आपका यज्ञ पूर्ण हो जाता है, becomes pure. शुद्ध हो जाता है। Therefore, इसलिए since I read and I see many things, क्योंकि मैं हमेशा बहुत कुछ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत कुछ देखने I को have a मिलता है। I have a nature that whatever I get, I apply. मेरा स्वभाव है कि मुझे जब भी कुछ अच्छा मिलता है मैं उसको अपने में जोड़ लेता हूँ। So I started encouraging devotees. तो इसीलिए भक्तों को उत्साहित किया। Whenever I have to attend any yajna, I must be sure Tulsi is कि present. जब भी मैं कोई यज्ञ करता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ कि अंत में तुलसी जरूर पड़े। The same way introduce offerings और इसी Tulsi. प्रकार हम तुलसी की लकड़ी से अर्पण करते हैं रोज लैंप ऑफरिंग। It is offering. यह हमारी सेवा है भगवान की। The same like you eat Tulsi. जैसा तुलसी खाते हैं, Some people say swallow but don't touch it with the teeth. कुछ लोग बोलते हैं बस निगल जाओ, दांत मत लगाओ, It's an offense. यह अपराध है। It's an offense. Enter your body. लेकिन वो जाकर अंदर ही चाहे खाओ चाहे चबाओ, So you should eat it. इसलिए खाना चाहिए हमको चबा चबा कर। It's not an offense. इसमें कोई अपराध नहीं है। You see in my mouth, Tulsi is inside. देखिए मेरे मुंह के अंदर तुलसी है सर। I always keep Tulsi. मैं हमेशा तुलसी खाता रहता हूँ। On the CC. I will have Tulsi with me. So anytime I can leave my body, no problem. I'm secured. तो मैं कभी छोड़ लूँगा, मैं बन जाऊँगा। So be prepared. Be prepared. Prepared मैं anytime. तैयार होता हूँ। And then Prem आपका Maharaj. दूसरा प्रश्न था श्री प्रेमानंद महाराज जी। We should be chaste. हमें Should be वफादार chaste. होना चाहिए, Should be chaste. वफादार होना चाहिए। If it's Prabhupada, we should be for Prabhupada. अगर प्रभुपाद जी के लिए आए हैं, प्रभुपाद जी, Let us follow Prabhupada. तो प्रभुपाद जी को पालन करें। If you want to be in ISKCON, अगर आप इस्कॉन में अपने को मानते you should हैं, follow Prabhupada. तो प्रभुपाद जी का पालन कीजिए। If we think that अगर हमें लगता है ऐसा Prabhupada is not qualified to give us prayer, कि प्रभुपाद जी योग्य नहीं है हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए, and then we are jumping here and there, तो हमें यहाँ वहाँ भागना है, we should go there तो ठीक है वहाँ जाइए, and stay there. लेकिन वहाँ रहिए, Don't mix up things. You not फिर get यहाँ मत आइए, you don't get anywhere. वहाँ रहिए या यहाँ आइए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना Just- मिलेगा ना ये मिलेगा। Just follow one thing एक चीज का पालन करिए अच्छे से, and be sure this is what you are doing. और उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि हमको मिलेगा। Arjuna told Krishna this अर्जुन ने बोला कृष्ण को in Bhagavad Gita. गीता में, Krishna, कृष्ण you taught me this, you taught me this. आपने मुझे ये you taught me बताया, this. वो बताया, ये बताया, I don't understand. मुझे को समझ नहीं आया। You yourself, आप स्वयं, which is the best teacher, आप सबसे महान all शिक्षक हैं, all the things you are teaching me, आपने सब जो सिखाया, just give me one मुझे एक रास्ता बताओ which I can follow. जो मैं पालन कर सकूं। We have two eyes, हम तो दो आंखें हैं, but you cannot see two bottles at
at a time. लेकिन हम एक बार का दो चीजें नहीं देखते हैं. You cannot नहीं. close one eye, एक आंख बंद करो. then you can see. एक चीज देख पाएंगे आप. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.